Hello everyone, welcome back to a new video. I am Dr. Jay Savla. I have recently completed my MBBS from KM Hospital Mumbai and I have secured an All India rank of 80 in NEET PG. I hope you all are doing well. Please take care of your health. There is a lot of COVID going around. A fit mind and a fit body will always produce excellent results. So please take care of your health first. This video is basically about the art of solving MCQs. It is not related just to NEET PG. It is about all the strategies and the tricks which I have used through all these years to achieve a good output. In all these competitive exams, one thing is sure that no matter how much knowledge do you have, if you are not able to solve the MCQs or express it properly, you'll never ever achieve a good rank. So these are the few basic points which you should keep in mind, and if you follow them religiously, I'm sure your scores and your performance will increase. So I will start. First point ever, first point, please take this in a very correct way, that never ever take an MCQ lightly. Like I had a professor who used to say कि जितना ज़्यादा सिंपल MCQ है उसको उतना ज़्यादा ध्यान से करना, क्योंकि there are two factors because of there are two reasons behind that. First is that if you get that easy question wrong, you are doomed. Like you are doomed for a simple reason that more than 10,000 20,000 people will get that question correct and your rank will go somewhere else from where you want. And the second reason is that for simpler easier questions we have a tendency to take them lightly and make silly mistakes. Like we just forget to read that not पूछा था instead of is, या फिर ट्रू और फॉल्स में फॉल्स पूछा था या ट्रू पूछा था, एक्सेप्ट था कि नहीं वैसा. या समटाइम्स वी जस्ट डोंट रीड ऑल द 4 ऑप्शंस एंड जस्ट बाय रीडिंग 2 ऑप्शंस वी फील कि हाँ ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पढ़ा ही नहीं. दिस मिस्टेक यू कैन नॉट एवर मेक. ओके, सो दिस इज दैट, लाइक जितना ईजी क्वेश्चन है, make it a point that you solve that question even more carefully. Okay, so then the second question is, like, now this is regarding a little regarding NEET PG, that if you have a long stem clinical question, as we know you have to solve 200 questions in 3.5 hours, so it's almost maximum one question per minute. That also is a little more. It's almost 45 seconds per question. So for long-term clinical questions you have two strategies. First is always read the demographics कि 40-year-old female है या 30-year-old male है या क्या है. So you have an idea कि हाँ 40-year-old female with rash किधर कुछ दिख गया, then you are suspecting SLE ऐसा कुछ. So first read demographics and then read the last part of the question कि what are they asking out of you. Like are they asking what is the diagnosis, or are they asking what is the next step in management, या are they asking what is the next investigation you will have to make. And then accordingly how much like what are they asking, then read the question. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि they have given a very long history just to waste your time, and then suddenly they are asking कि she was diagnosed with SLE and now what is the drug of choice या what is the investigation of choice. तो आपको वो सब कुछ मेहनत करना ही नहीं था. यू नो कि SLE है तो ठीक है, आपको ANA करना है वैसा. Okay, so make sure that you don't waste a lot of time in reading the long term clinical questions. And so second part is, whenever there is an image in a question, don't directly jump to the image. Just first again follow these same rules, that first read the demographics and what is expected out of you, and then go to the image. Therefore you have an idea कि ये image क्या हो सकता है. बहुत बार ऐसा हिस्टोपैथोलॉजी का इमेज होता है या फिर कोई और सेक्शन का इमेज रहता है, एंड यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम फिगरिंग आउट व्हाट इज़ इट. बहुत बार कैसा रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि इमेज में क्या होने वाला है, एंड दे आर आस्किंग यू समथिंग एल्स. वो इमेज इज़ ओनली टू हेल्प यू. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ दैट गेटिंग अ क्वेश्चन करेक्ट इज़ नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन योर नॉलेज. मेरे साथ खुद बहुत ऐसे हुआ है कि आई हैड नो क्लू अबाउट द टॉपिक, आई हैड नो क्लू अबाउट द ऑप्शंस, बट स्टिल बस बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन, बाय फिगरिंग आउट समथिंग जो इतने साल पढ़ा है, कुछ नॉलेज मतलब कुछ लॉजिक अप्लाई करके, एंड एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, we come to an answer and try to get the question correct. And this cannot be taught to anyone या cannot be learnt कि हाँ मैं अभी YouTube वीडियो बना लूँ और आप सीख लोगे. It will only come to you by practice. Therefore we say कि practice thousands and thousands of MCQs, because there can never be an exam कि आपको 200 क्वेश्चन का एग्जाम है या 300 क्वेश्चन का एग्जाम है and you know all the questions या you know more than 150 questions या 160 questions.
There are going to be 10, 20, 30 questions in an exam always, of which you have no idea, and your rank, especially in the higher ranges, will be decided by the questions you do correct of which you have no idea. क्योंकि ऐसे बहुत 1 second ऐसे ऐसे बहुत लोग रहेंगे जिनको वो आइडिया नहीं रहेगा कि वो क्वेश्चन क्या था, बट दे आर डूइंग दैट क्वेश्चन करेक्टली. तो एंड इन these questions there are two things. First, that there are two options, like you have to be like you have to eliminate options. मतलब अगर क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, थोड़ा ऑप्शंस का आइडिया है, कुछ सुना हुआ है, तो तब ये सब जो आउटसाइड नॉलेज रहती है विच इज़ नॉट एग्जैक्टली रिलेवेंट टू द क्वेश्चन काम आती है, एंड यू कैन एलिमिनेट एंड कम टू एन आंसर. ओके, then this is for everyone. Like in a test or exam, you have to never give up on a question, even though you have no idea कि क्या चल रहा है, इन लोग क्या पूछ रहे हैं. Never ever give up. Or even if you are confused between two options, don't mark at that point. Come back to that question later. Like once you have finished all the questions, come back to that question later. There are many times this happens that when you come back to the question, you read the question in a proper way, in a better way. Your mind understands it in a better way. You have solved other MCQs, so your mind is little distracted. You are more fresher. So कैसा रहता है कि you get a new perspective, and sometimes वो automatically answer click हो जाता है. बहुत बार ऐसा रहता है कि first time when you come to question, you are not able to recollect the exact answer या कुछ. Second time आप जब पढ़ते हो तब आपका जो permanent knowledge है, जो ब्रेन में किधर तो छुपा है, टेक्स अ लिटिल टाइम समटाइम्स टू गेट रिट्रीव्ड. तब तक वो हो जाता है, एंड देन यू कम टू मतलब वो अंदर से एक आ जाता है, अच्छा हाँ इसका आंसर ये था. बहुत बार वी आर नॉट एबल टू डू इट इन द फर्स्ट गो. ओके, सो नेवर एवर गिव अप ऑन अ क्वेश्चन, कम बैक टू इट लेटर. एंड इसमें भी ऑलवेज ट्रस्ट योर गट फॉर ऑल दोज क्वेश्चन. मैक्सिमम नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें यू आर कन्फ्यूज बिटवीन टू ऑप्शन. इन दीज सिनेरियोज ऑलवेज ट्रस्ट योर गट, and just remember this point which many few people know, that whenever you are trusting your gut, don't fall in this trap कि क्वेश्चन का कुछ अता पता नहीं है, पर कभी कभी कोई ऐसा ऑप्शन रहता है विच यू हैव हर्ड, मतलब यू नो दैट वर्ड, तो आर टेंडेंसी इज टू मार्क दैट ऑप्शन. दिस इज लाइक अ ट्रैप, लाइक इट इज़ अ ट्रैप सेट बाय द एग्जामिनर कि क्वेश्चन टफ रखा है, 3 ऑप्शंस बहुत. हाँ सॉरी, आई एम बैक, सम डिस्टर्बेंस टुडे. सो हाँ, तो बेसिकली आई वाज सेइंग कि बहुत बार ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है कि इट इज़ अ वेरी टफ क्वेश्चन. ही सेट्स लाइक ही 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि विच यू हैव नो आइडिया. 4th ऑप्शन जानबूझ के वो एक ऐसा वर्ड देगा या ऐसा ऑप्शन देगा विच इज़ नोन बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल मार्क दैट ऑप्शन बिकॉज दे ओनली नो दैट वर्ड. ऐसा मत करना. एंड द दूसरा टैक्टिक इज इन दीज सिनेरियोज, समटाइम्स यूजुअली जो द लॉन्गर ऑप्शन जो रहता है दैट माइट बी द आंसर. तो वो भी एक याद बात रखना, जब बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं तो द लॉन्गर स्टेटमेंट्स एंड द ऑप्शंस हैव अ मोर टेंडेंसी टू बी द राइट आंसर. Okay. And this trap, like the trust your gut, is very important because in this NEET PG I changed 3 questions and I got all the 3 incorrect. So if I had got these 3 questions correct, my rank would have been in top almost 20-30. So it makes a huge difference. Don't ever like if you have marked something out of naturally it has come to you as an answer, don't ever change it. No, don't ever even go back to the question. And this is the point which I have, like I developed it in my 11th and 12th, and then I have used it successfully, that always solve questions with the same concentration and energy which you will use during your actual exam. Always give a test as if it is your last NEET exam. Always solve MCQs, even if you are solving question modules, even if you are solving random questions. Do it in a very diligent and a very dedicated way, because like your body should be trained कि जैसे ही मैं एक MCQ देख रहा हूँ मेरी पूरी कॉन्सेंट्रेशन एंड मेरा पूरा एनर्जी वही क्वेश्चन पे फोकस्ड है. आई एम नॉट डाइवर्टिंग माई सेल्फ एनी वेयर एल्स. एंड वंस यू डू दैट, ट्राई टू डू दैट इट रिपीटेडली, वो कॉन्सेंट्रेशन है, वो एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे. एंड बाय द टाइम यू कम टू द एक्चुअल एग्जाम, इट विल बी सच कि वो पूरा नेचुरली फ्लो होगा. यू विल नॉट हैव टू मेक एन एफर्ट. मतलब आप ऐसा रिलैक्सली सॉल्व करोगे ना, तो भी आपका वो एनर्जी लेवल इतना हाई रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई रहेगा कि इट विल कम नेचुरली टू यू. इसीलिए प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन एज इफ यू आर गिविंग एन एक्चुअल एग्जाम. डोंट एवर ऐसा कि अरे सिर्फ ऐसे बैठे एंड क्वेश्चन सॉल्व करें. डोंट डू दैट. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट इज द रिलेटेड टू सिमिलर थिंग, like till the end, like till your desktop in the final exam shows that you have submitted your paper, everything is in your hands.
and it is only you and the questions. Never ever have a second thought or third thought about anything else. It is only you and the questions. You should have 100% focus and attention. That will like eliminate all the silly mistakes. हम जो silly mistake बोलते हैं ना, it is basically due to lack of concentration and due to ऐसा थोड़ा casually लेने का. This attitude leads to silly mistakes. If you solve it with utmost dedication, you will not make a silly mistake. Okay, I hope this video was helpful. I think my next video will be how to review GTs and make good use of it. Many people have requested that, and do suggest other topics if you like this. Please subscribe to my channel and hit the like button. Thank you.